was the IT में नमस्कार। क्या था जो ये हफ्ता का टाइम ज्ञानोत्सव 5 मिनट देख लियो ज्ञानोत्सव वेबिनार। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। साउंड कनेक्ट कम हो गई। ज्ञानोत्सव वेबिनार के श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वेबिनार बहुत ही खास है क्योंकि पहली बार हम एक मेथोडोलॉजी को लेकर के ये वेबिनार कर रहे हैं। आज तक का जो वेबिनार हम करते रहे हैं इसमें कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने शेयर किए हैं, रिसर्च मटेरियल शेयर किए हैं, कंक्लूजन शेयर किए हैं। लेकिन ये पहली बार एक यंग स्कॉलर नेहा थुरेजा, जो कि जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पॉलिसी डिपार्टमेंट क्या है, सेंटर फॉर पॉलिसी, जिंदल स्कूल फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, इस स्कूल की रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कैंडिडेट हैं और बहुत ही जल्दी अपना रिसर्च सबमिट करने जा रही हैं। इन्होंने पंजाब और बिहार के एग्रीकल्चरल फीचर्स का एक कंपैरेटिव स्टडी किया है। लेकिन आज हम खास तौर से इनसे सुनने जा रहे हैं कि इन्होंने क्वालिटेटिव मेथड्स का कैसे इस्तेमाल किया है और एक विशेष रूप से एक सॉफ्टवेयर है एटलस टीआई का कैसे इस्तेमाल करके इन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया है। इसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। नेहा थुरेजा ने अपना बीए इकोनॉमिक्स में किया है गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और एमईटी से इन्होंने एमए किया है, एमईटी नोएडा से एमए इन इकोनॉमिक्स किया है। फिर ये सीआईपीटी में रिसर्च स्कॉलर के पोजीशन में काम कर चुकी हैं और उसके बाद इन्होंने जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी परस्यू किया है। आज हम इनसे सुनने जा रहे हैं गोइंग बियॉन्ड नंबर्स यूजिंग क्वालिटेटिव टूल मेथड फॉर ऑपरेशनलाइजिंग पब्लिक पॉलिसी। सर अपना म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। स्वागत है नेहा आपका। Thank you for this opportunity and for this lovely introduction. I'm going to talk about how I've used qualitative methods, and it will be more of a theory, and next I've planned it in such a way कि हम एटलस टीआई सॉफ्टवेयर के साथ इंट्रोड्यूस हो पाए। मैंने फ्री ट्रायल का एक लिंक सबके साथ शेयर किया था ग्रुप पे, तो अगर आपने वो फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर का डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज डाउनलोड कर लें, सो दैट यू आर फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर। जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉफ्टवेयर, how you can use it for coding analysis, and then we will discuss how qualitative methods have helped me in my research. So it will be a short presentation with a little bit of hands-on experience, and I will be using Hindi and English, both the languages, to deliver this webinar. I hope everybody is comfortable with that. So going beyond, So this is how I've planned the webinar. First, we will understand the basics of qualitative research. Then what are the research tools? Introduction to qualitative data analysis softwares, and practical applications of the qualitative research. Before I present this epistemological snapshot, I want to share कि अभी तक इंडिया में जो भी maximum research होता है, that is quantitative based, especially in the field of economics and social sciences. Political science में भी we end up using more of numbers because that is what drives the policy making. And what we end up using is time series data, cross-sectional data, panel, regression, correlation, ANOVA, t-test, z-test. We are all aware about that. और जो पॉलिसी बनाई जाती है वो बेसिकली मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल पे क्वांटिटेटिव डेटा को देख के बनाई जाती है ज्यादातर। एंड अब जैसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंडर आप रूरल हाउसहोल्ड को 12,000 का साल में एक बार आपको वो मिलता है। एक ही बार मिला था बेसिकली जो पॉलिसी लॉन्च हुई थी,
और उस वो था कि आप टॉयलेट बना लें स्वच्छ भारत के लिए, कि खुले में शौच ना करें। सो अब जो डेटा गवर्नमेंट कैप्चर करती है कि कितने घरों को वो पॉलिसी का बेनिफिट मिला, तो उस हिसाब से सपोजिडली एक गांव में 100 घर हैं और उनमें से 40 को अगर मिला, तो 40 ने उसका इस्तेमाल कैसे किया, तो उनके हिसाब से तो ये हो गया कि 40% households are beneficiaries and 40% households have toilets in their home. But when we do qualitative research, उसमें हमें चीजें निकल के आती हैं कि अगर 40 थे तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया, 40 में से 10 ने किया सपोजिटली, बाकी जो 30 घर थे उनको जो 12,000 मिले, उन्होंने वो 12,000 या तो दहेज में दिए, या फिर वो लोन रीपेमेंट में दिए, या फिर वो डॉक्टर के इलाज में दिए किसी तरह से। बट जो गवर्नमेंट का पैसा आया था, पॉलिसी जिस इंटेंशन से उनको दिया गया था, उस इंटेंशन से वो बेनिफिट यूज नहीं हुआ। और ये वाले जो लैक्यूनास है हमारे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, दीज कैन बी कैप्चर्ड वेरी वेल बाय क्वालिटेटिव रिसर्च. So, coming to the introduction, epistemological snapshot. So, qualitative research primarily इसकी बात लगभग 1980s से शुरू हुई थी, and this was originated mainly in US and Germany. और they were trying to capture rapidly changing social fabric, and the world was developing, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, सब चीज़ें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। और बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये बोला कि अब सोशल साइंस रिसर्च is becoming obscure. You cannot only rely on the quantitative. You have to go to the grassroots levels, and there are papers by Habermas and Greets which I can share if anyone wants to read them. Then there was this argument by Tolman in that modern science is dysfunctional, and that argument explain how and why qualitative research has special relevance for social science research. Types of qualitative research. There are 3 types: exploratory, interpretive and subjective. Exploratory में हम ज़्यादातर ये देखते हैं how and why, and we try to understand a phenomena. Inductive reasoning होता है, contextual, context basis पे understanding होती है. Basically अगर मेरा जो रिसर्च बेस रहा है पंजाब और बिहार को लेके, सो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है. मेरा जो द थिंग इज, आई स्टार्टेड ऑफ विद कि फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड बिहार बोथ आर इन डिस्ट्रेस. व्हाट इज द रीजन गिवन कि पंजाब में जैसे बहुत डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर को लेके, बिहार में उतना डेवलपमेंट नहीं है, बट फिर भी डेवलप्ड स्टेट में भी डिस्ट्रेस में है फार्मर, और अंडर डेवलप्ड स्टेट में भी डिस्ट्रेस में है. रीजन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. देन इंटरप्रेटिव रिसर्च, जो सबसे फेमस रिसर्च अभी तक मैंने देखी है और टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाई जाती है, there is a famous example. This research is done in Harvard University, where people have studied America's development journey by interpreting the speeches of America's presidents over the years. अब्राहम लिंकन से लेके ओबामा और ट्रम्प तक के जो भी उन्होंने स्पीचेस दिए वंस दे हैव कम इनटू पावर, सो अमेरिकन ड्रीम से लेके, सो दे हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट हाउ दो स्पीचेस हैव इवॉल्व्ड and how the development of United States of America has evolved. So this is the interpretive kind of research. Subjective में सेम विलेज में सेम पॉलिसी को लेके, सेम सिचुएशन को लेके सब्जेक्टिव रियलिटीज हो सकती है हर एक अपनी हाउस होल्ड की, हर एक फार्मर की. सो इट इज अ डीप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च. सो इट इज वेरी मच रेलिवेंट इन करंट टाइम्स. Coming to data collection tools. Data collection tools for qualitative research are interviews. It could be structured, semi-structured, unstructured, observations, participant, non-participant. So when you go to a village, you can actually take an interview. आप उस setting में आप participants की observation भी ले सकते हो. आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर village में आप बैठे हो और focus group discussion हो रहा है, फार्मर्स आपस में डिस्कस करें, बट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द लेबर
who is not agricultural labor अगर वहाँ पे है उसी setting में और वो अगर participate नहीं कर रहे हैं discussion में but they are there and you can observe their behavior patterns and everything else to enrich in your research. Then documents and text analysis. Why I've highlighted this, I will be giving a hands-on experience based on in this webinar using document and text analysis. Qualitative research tools में जैसे interpretive research में we analyze the speeches. इंडिया में भी एक अभी रिसर्च चल रही है वेयर वी आर एनालाइजिंग द बजट स्पीचेस जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीचेस सॉरी जो है उनको आप एनालाइज कर रहे हो टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस जो फोकस ऑफ द पॉलिसी कैसे शिफ्ट हो रहा है. दिस इज अ स्टडी गोइंग ऑन गोइंग स्टडी है ये अभी. Visual methods, you can use photographs and videos to enhance your research in qualitative methods. Then data analysis tools are coding and thematic analysis, narrative analysis, discourse analysis. And tools में जैसे qualitative data analysis software which we will be talking about is Atlas TI, NVivo, etc. Mixed method research software, DDoS. Ethical considerations. So there, since we are involved with human subjects, we are going to the village, we are going to the setting where we are trying to involve the participants, be in their system. Consent is very important. आप किसी एग्रीकल्चरल लेबर की लाइफ को ऑब्जर्व करके अपने रिसर्च का पार्ट बना रहे हो तो आपको उनका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है. So make the participants and non-participants aware about your research. If you are going to a village, then give them the option to withdraw their participation. आप अगर कैफे में बैठ के या कहीं पे विलेज में जाके आप किसी का फोटो लोगे तो they will definitely object without knowing. So it's very important that they consent to clicking of the photographs and publishing that in your research. Maintaining the data privacy, cultural sensitivity. So cultural sensitivity के लिए qualitative research में जो my own being as a researcher affects the qualitative data. For example, अगर मैं पंजाब में डेटा कलेक्ट करने गई थी जब पायलट में भी और बाद में भी, there was a difference. If I was dressed in kurta and jeans, and the response of the household was different when I was dressed in patiala salwar, patiala suit में. तो जब अगर once I started wearing their local clothes, started dressing up like the locals, they were more open to talking to me. So I had rich data on the days when I was dressed like a Punjaban there. And when I went to Bihar, the data was much better when I started using the local language terms. जैसे क्यों की बजाय अगर मैंने काहे पूछा किसी किसी जगह में कि काहे ऐसा हो रहा है, तो they could trust me more and tell me more about what I wanted to ask, basically अपने cost structure को लेके, income को लेके, livelihood को लेके. So cultural sensitivity is very important in qualitative research. And हमारे यूनिवर्सिटी में वी हैव एन एथिक्स रिव्यू बोर्ड, बट इफ यू आर फ्रॉम, आई होप एथिक्स रिव्यू बोर्ड इज इन ऑल द यूनिवर्सिटीज. अगर नहीं भी है तो आप कहीं सर्च कर सकते हैं वेयर यू कैन गेट your research proposal reviewed by the ethics committee within your university or within your organization if you are going for qualitative research. So these are the qualitative data analysis softwares. बहुत सारे हैं, मैंने जो मेजर मुझे पता है HubSpot, Magsta, NVivo, Atlas TI, DDoS, उनका मैंने शेयर किया है. Now I will talk about the hands-on experience. So I'm just going to stop sharing this screen and open the Atlas TI. Right. Just allow me to share screen. Okay, is my desktop visible to everybody? Can somebody confirm if my... Yes, Okay. yes, visible. Okay.
So this is what Atlas TI I have, Atlas TI. Yeah, ma'am. Yeah. So if you have downloaded the free version, you can try and open that. So this is what the interface of the software looks like. First, once you click it, you will see the projects that are there. These two are my thesis projects, which is the Bharri interviews that I took, then Punjab interview analysis. So there are 27 documents, 31 documents, how many quotations, how many codes, memos. I will, so to begin on, and there are, so जैसे ये cloud के ऊपर cross लगा हुआ है, so this is not backed up on the cloud. बट इसके ऊपर क्लाउड में वो सिंक हुआ है, तो ये जो थीसिस वाले प्रोजेक्ट है मैंने क्लाउड पे सिंक कर रखे हैं फॉर बैकअप, बाकी हैव नॉट सिंक्ड अप ऑन द क्लाउड, राइट? So this is what the software looks like. This is the icon where you can start a new project. अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो एटलस टीआई यूज कर रहे हैं, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट यहाँ पे. So if you click on this new project, you can type the name of the project, put a comment description what this project is about, and it will be there. So if I have to write Gyan Utsav demo project, so this is how it looks like. It's a demo project. Project has no comments. Then document, codes, memo. So to add a document, you can add a document, add files, folder content, linked video. You can put video and audio in this software. You can import transcripts, or you can just start writing a new document here itself. अगर आपके पास डेटा एंट्री कम ही है तो आप एक्स वर्ड में ना डाल के सीधा सॉफ्टवेयर में ही डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज वन एस्पेक्ट. New geo document is also there. So I've not used this feature because I did not need it. So I don't know what this does, but yeah, this is geo mapping में भी geographical कुछ जो अलग अलग जगह पे आप heat maps create करते हैं, उस तरीके से अगर यूज करना हो तो maybe that is there. And then quotation. Now I would like to close this and show what I've all. These are the. Let me just familiarize you with the interface. This is the text search, regular expression search. Text search में आप document में फिर concepts हैं, opinion mining, word frequency. This is what is fascinating. AI coding, intentional AI coding and AI summaries. कई बार आपके documents जो जैसे interpretive summaries है, आपने कोई PDF डाला जो 400-300 पेज का है और you don't have the time to read it. You can just put an AI summary and you can read that document. So this is a very good software to even do your literature review analysis. अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, थीम्स बनाने हैं, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं. मैंने बहुत एंड में लिटरेचर रिव्यू के लिए इसको यूज किया था. इनिशियली तो आई फॉलोड द ट्रेडिशनल मेथड्स. So I will just close this project. Coming to correction. So right now I'm working on a correction chapter. मेरा जो सेकेंडरी डेटा है, तो मैंने इसमें डॉक्यूमेंट्स जो डाले हुए हैं, अब जैसे 45 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किए. अब जैसे these are the document groups that I have created. This is the NSSO file. Neha, please tell me when to stop recording if there is. No, sir, this is okay. No need to stop recording. So this is okay. And so right now NSSO files. So these are the NSSO files. I've started to classify all the secondary data related documents within this Atlas TI software. Okay, I have this NSSO. If I need to look at this 420 final, first thing I can do is I can create a word frequency for this document. Again, 1420 final.
select determining quad cloud. Supposedly, I want to look at the indebtedness data. So it's just taking a little time because I have a lot of files here. एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें जहां जहां पे इंडेटेडनेस वर्ड है इस पूरे फाइल में वो सारा आ जाएगा. एंड आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग कि ओके मैंने इसको अगर लिस्ट में प्रिपेयर कर दिया, हाउस होल्ड्स कर दिया, कंट्रोल, देन रूरल, कल्टिवेटर, सर्च इन कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट सर्च. अब ये कहाँ पे आ रहा है? अब जैसे ये रिपोर्ट नंबर पे आ गया तो ये कहाँ पे ये स्टेटमेंट है? अब जैसे ये प्रीवियस टेक्स्ट सर्च रिजल्ट मेरे लिए कहाँ रेलेवेंट है? कौन सी चीज मुझे देखनी है? हाईलाइट क्या है? रूरल अच्छा यहाँ पे है, शेयर ऑफ डेट बाय क्रेडिट एजेंसी. सो इट इज वेरी इजी टू सर्च बिग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. की अब बहुत सारे रिपोर्ट्स में बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो मैं ये मेरे पास अगर वर्ड लिस्ट आ जाती है इसमें से मैं फिर सिलेक्ट कर सकती हूँ मेरे लिए रेलेवेंट क्या है. एंड देन आई कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली एंड analyzing what needs to be done. Is it clear or are we lost? Is everybody Good, lost? good, Hi. good. Okay. Go ahead. Okay. So this is how we work on these things. Now coming back to document manager again, what I'll do is I'll put a miscellaneous. So there is this miscellaneous reports, assessment of pre and post harvest. I want to open this. Okay. अब मेरे पास जो रेलेवेंट चीजें अगर मुझे इसमें से चाहिए, आई वांट टू कोड समथिंग. Indian over time these seen, so you can read the document and select certain things. Okay, how do we code this? Supposedly I want to code this statement. Coding, I can see during the nature of demand for has changed for both domestic. Change in demand could be one variable ki change in nature of demand. This can be one code which will be visible here. In the process, many traditionally cultivated crops either have lost their area or gone out of cultivation. Problems due to change in demand. Professor Sweater Sheet Bush, Roy JSGB. So, this is something that can be done, right? These are a bunch of things we can do in this process. Coding, analysis, and then you can build network maps. अब जैसे मुझे इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में अगर कोई नेटवर्क बिल्ड करना है, analyze, code, co-occurrence analysis, code document analysis, import, export, sorry. Acha, okay, I am a little lost. Where is the coming to codes? Yes, there is network. Change. Problems due to change in demand, due to change in demand. If I create things like that, I can just drop the codes here.
Show quotation, fit. Okay. Okay, so right now it's not, I'm not able to do it for some reason. But you can build networks around these things. I can show another project. Just a second. So this is how the interface of the software looks like. Uh, Going back to documents again. Suppose I want to look at this and I want to build a summary. AI summary अगर मुझे इस फाइल का चाहिए तो एक डॉक्यूमेंट का if I want to summarize. Now you need to be very careful. The text contents of the selected documents will be uploaded to OpenAI for processing. If you have very confidential data, your primary data, make sure you don't use AI summaries because then it will create plagiarism in your work. Always make sure that you are only uploading secondary data document which is already available on Google to OpenAI, not your primary data files. So it will give you a summary, but this is how the software looks like. If anyone was doing it while I was doing it, can you share your experience or problems you faced or any questions you have with respect to the interface of the software? Anyone who wants to talk about it, anyone who was working on the free version of Atlas TI? So you're on mute. I have downloaded the software, but I couldn't work on it. Okay, But, this demonstration will certainly help us. okay, Now we will try to do it. I got little bit of exposure, so it right. will take little time, but we will do it. No, Yeah, yeah. So but the it's a thing very is that it's very costly software, isn't it? We have to buy it. Yes, sir. We have to buy it, but if your university already has it, it will be very beneficial. I mean, universities can get access to this software. I'm not part of university, so that's my problem. And maybe you can share. So I used what you about can the free use version? student ID also if people are Free version having, is available only for 5 sessions, just five Okay. sessions. Okay. yeah, free version is available for 5 sessions. just like a ma'am Soch Chakra ma'am. This software Yeah. just like a Soch Chakra. I've already installed it, but Okay, so the AI summary is ready. I will just share that again. Yes. Can we also have some graphs of words and all in that? Yes, sir. We have some graphs, but that I don't want to show right now, given it's privy to thesis. I can show it on our one-on-one meeting right now because But given Okay. No, you plagiarism should be already careful. आया हुआ है, yes. Yes, so should be I'm careful. not very keen on showing uh, those graphs. I can try to make one on the ma'am call. after some time, ma'am, Yeah. can you share? Yeah. After submission, I can definitely share. Okay. Thank Yeah. you, ma'am. Thank you, Yeah. then. So this is what AI summary looks like. This report examines the impact of farm mechanization on agriculture growth in India, focusing on Bihar and West Bengal. It analyzes data. So this gives you a one paragraph summary of the entire 100-page report. Sometimes these summaries are useful, sometimes they are not. Right now, this is not a very useful summary. So given it's done by computer, it will just give you an overview of the document. Is document में क्या क्या है? So that is how you can use this software कि आपको ये paper पढ़ना चाहिए या ये summary पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, given we have bunch of things to read all the time. So that is one thing I wanted to share. Now moving on to the presentation. I hope this was enough. I would like to finish by 8:15 so that we are on time and have some time for discussion. Yeah.
So practical applications for qualitative research. What I feel that qualitative research helps to fill in the gaps and limitations of the secondary data published and used for policy making. It also takes into account the contextual realities. And इंडिया जैसी कंट्री में वेयर इवन हमने ज्ञान उत्सव की कॉन्फ्रेंस में भी एक बार डिस्कस किया था कि बिहार में ही 3 बेल्ट्स हैं एंड विद इन 3 लैंग्वेज बेल्ट्स कल्चर चेंजेस social group changes and a lot of dynamics change which influence the socio-economical, political and cultural discourse. Qualitative research can help us capture that and make effective policies. And it also helps to evaluate policy impact. जैसे मैंने presentation के शुरू में share किया कि जो गवर्नमेंट डेटा कैप्चर करता है कि 40 हाउसहोल्ड्स गॉट द बेनिफिट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, बट एक्चुअल बेनिफिट तो सिर्फ 10 हाउसहोल्ड्स को हुआ जिन्होंने टॉयलेट्स बनवाए, बाकी उन्हें अलग अलग पर्पस के लिए उस मनी को यूज किया. सो वी कैन बिल्ड एन इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिजाइन. नाउ कमिंग टू द डिस्कशन हाउ आई वर्कड ऑन qualitative research, how I incorporated. There's no slide for that. I try to just talk about it as much as I can. And so my central question was to analyze the effectiveness of agricultural policies in enhancement of farmers' livelihood. Case study, initial phase mein I only studied Bihar, and in initial phase mein I was only focusing on Punjab. And as the study progressed, research proposal and synopsis stage pe, I had to incorporate Bihar for comparative analysis. And that enriching my research to a very large extent. और मिक्स्ड मेथड क्या किया इसमें कि अब मुझे जैसे 5-6 पॉलिसी एरिया स्टडी करने थे कि एमएसपी पॉलिसी पे अगर मुझे बात करनी है, मुझे क्रेडिट पॉलिसी, इनपुट पॉलिसी, इन सब पे बात करनी है, और सबका सेकेंडरी डेटा जो मैं स्टडी कर रही थी, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस हो, फिर चाहे वो एनएसएसओ की फाइल्स हो, फिर EPWRF का इंडिया टाइम सीरीज हो, अलग अलग जो सोर्सेज मैं स्टडी कर रही थी, देयर वाज नो वे आई कुड कंपेयर ऑल ऑफ दीज इन वन गो. सबके सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज अलग थे, सबके डेफिनेशंस अलग थे, सब. So there was only averages and I could not have a holistic research design using secondary data only, and I could not build a model based on that. Given these problems, I realized that village study is something, or qualitative research or mixed method research is something that can help me answer these questions at a micro level, and clubbing those things with the quantitative trends, averages that I have, how things have changed over time, it will benefit की effectiveness क्या रही है policies की, और क्या lacunas है village level पे, grassroots level पे. So that helped me. और इसमें फिर जब tool जो मैंने use किया, it was structured interviews. And स्ट्रक्चर इंटरव्यू स्केड्यूल बनाने के लिए भी मैंने सेकेंडरी लिटरेचर से पूरा उसको स्टडी किया कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग है सेकेंडरी डेटा में जो मुझे इंटरव्यू से निकालनी है. हम अभी तक जो प्रेवलेंट क्वेश्चनर्स रहे हैं, दे आर मोर लाइक Likert scale शायद. I'm sorry for that terminology. So I strongly agree, disagree, agree, strongly disagree, neutral, इस तरह की स्केल्स पे कई बार डेटा कलेक्ट हुआ है, yes and no के उस पे कलेक्ट हुआ है, but not proper interviews. Then I came across a research. I hope this is visible. So this is a book by Madeleine Deinhard. Is it visible? I just No, ma'am. Okay, I hope this is visible now. Yeah. So I'll share a picture of this book on the group. इसमें इन्होंने हिमाचल के एक विलेज का स्टडी किया है, जिस सारे हाउसहोल्ड्स, छोटा विलेज था, 123 हाउसहोल्ड्स थे, एंड शी हैज डन एन एथनोग्राफिक विलेज स्टडी ऑन माइग्रेशन, एंड ऑल्सो अ स्टडी वेयर आप डिसाइड कैसे करते हो, अगर फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोग में से 2 लोग माइग्रेट करेंगे तो बाकी 8 क्यों नहीं कर रहे हैं.
So all or very deep description, very rich data things were answered in this book. And that is how I felt ki, okay, I should go and approach this way to answer my own research question, effectiveness of agricultural policies in enhancement of farmers' livelihood. लाइवलीहुड के लिए भी हमें जैसे इनकम को स्टडी करना होता है. चेम्बर्स की डेफिनेशन कहती है कि वी हैव टू वर्क ऑन इनकम एंड एसेट्स एंड रेजिलियंस टू शॉक एंड वल्नरेबिलिटी. सो इनकम का डेटा मुझे एनएसएसओ से मिल जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी भी उतना ज्यादा फार्मर्स इनकम पे डेटा नहीं है. फिर एसेट का भी हमें मिल जाता है एनएसएसओ के उसमें. बट रेजिलियंस टू शॉक कैसे आप स्टडी करोगे, रेजिलियंट टू शॉक्स? So that kind of questions were answered by qualitative research that I did, and I'm still doing. So narrative building करिए, thematic analysis किया है, themes ढूंढी है interviews में. और उसमें पहले तो the first focus was on demographic variables, then livelihood conditions, policy related info, and market conditions and agriculture details. फिर इसके बाद एक पूरा का पूरा network map बनाया है, which I will, if everything goes on time, I should be able to share within next 3 months. But yes, there is a network map of how these things are interconnected. That's what I wanted to share today. And thank you. Any questions, we can further the discussion. If there's something you want me to elaborate on, I can try to do that to the best of my capacity. Thank you, Neha. Thank you, sir. Thank you for introducing us to a new method. And now we have to learn from our younger generation many things, new research methodologies which are emerging. Okay. And now open this floor for questions. I can see Rishabh is here, Rishabh Mahindra. And if he has some suggestion or comment or any question, please come forward. I really like the way uh, the presentation was done. I myself am using like mixed methods research for my PhD work. Rishabh, kindly it- introduce yourself a bit. Yeah, so I'm a PhD scholar at the University of Missouri. I'm doing my PhD in applied economics. And I have a master's from Madras School of Economics in environmental economics. And before I came to the United States, I was all into quantitative research, and I was not introduced to something what you have just presented. And after I came here, my department has a lot of people from sociology, and my one of my professors, who is an economist, has been doing a lot of qualitative research for a really long time, and his colleague, like almost his age, learned a lot of quantitative work from him, like quantitative analysis tools. You did mention about um, how you or why you are using these things. I was just curious about what what introduced you to qualitative research as an economist, because I understand like most economics departments generally don't talk about it. So I was introduced to this qualitative methods and software in our coursework classes at GGU, which were run by ODS. So there was a course, and that prompted me to, get interested into the subject further. Interesting. Yeah, that's how I got introduced to that, Mhm. thanks to the university. Nice, nice. Yeah, I have used NVivo in the past to help my professor's project. Right. And I really like the interface of this software. It is more user friendly compared to NVivo. Yeah. Yeah, so I also tried NVivo free version and Atlas TI, and this was more comfortable for me to use. However, both the softwares do just the same thing. So there is no difference in the capabilities of it. It's just the comfort level of the researcher. Mm-hmm. Right.
Thanks. So, can we do a sentiments analysis also in this software? Yes, sir. Yes, sir. We can do a sentiment analysis. And should I give a demo of it? Sure. Yeah, I'll just do that. So I will try to open this document and search and forward sentiment analysis. So initially I was showing that sentiment analysis of individual documents can be done here, but if I just click on these document groups, it will do the sentiment analysis of all the documents in this one particular group. We can just try doing that right now. So you have to choose what sentiments you want to study. You want to study only the positive, you can just put positive, or if you want to study positive, negative, neutral, you can put all three. And you can also choose if you want to study paragraphs or sentences. Sentence-wise sentiment analysis, paragraph-wise. So we can do sentence-wise, maybe, if I do this. So basically what happens in this software is it gives you a starting point. Whatever it gives you, it's not ready for final submission. It just gives you a starting point to work with. And then you have to do the manual work with each and every statement. So it gave me all these sentiments using these things up. Sentiment negative. I don't see anything negative here. So one can just go through this thing. Okay, thus he increased dependence of farmers to meet on the rising cost of cultivation, decreased returns due to additional costs, that is many. So I don't think this sentiment is neutral. I can just, probably put it as a negative sentiment. Given on your research question, given on what you are trying to study, this works. It just gives you a starting point to do that. Sometimes when we are beginning to write our work or do the analysis, we don't have the starting point. हम exam में भी पुराने बोलते थे starting बता दो आगे का हम कर लेंगे. So that is what software does for us. It just gives one a starting point. In fact, it could be better when you design your survey interviews, because there you emphasize on certain words which are negative, positive, or something. Yes, All yes. these are reports, so Yes. might not be having a direct sentiment. Yes, so these are all the reports, but if I have to, what I can try doing is I'll put one interview. Try to, just not to put any in Yeah. the platform. If it's Yeah, maybe I can just, go close this project. Not save anything right now. I can. मेरे पास कोड्स में भी थे मैंने अगर किया होगा या So if I have to do a sentiment analysis, this can be a neutral sentiment for this statement. This is not giving any positive or negative. This will be a neutral sentiment. Then both crops are sold at MSP. So this can be a positive sentiment. This is a positive sentiment. Both the crops are sold at MSP. So if I'm looking at MSP मिल रहा है फार्मर को नहीं मिल रहा है तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. Transportation is not reported to be an issue. This again is a positive sentiment for me. In additional, so this is what one can do.
based on the sentiment analysis and quotations and how you want to present it. Neha, I was interested. Yes, sir. How students of history and sociology, for example, I am student of history of religion. Right. How we can use, or a student of literature can use this kind of software? Because I know that you have worked on kind of economic analysis and Right. it will help you there. Can you give me a little insight? Yes, How? sir. Yes. So basically, sir, it can be used for history. Specifically in history, we can, use this to do an interpretive qualitative research. When I talked about 3 types of research, there was exploratory, there is interpretive, and there is subjective reality. So in case of history, one can do an interpretive research or a subjective research, subjective realities of different historians or philosophers. And for this, we need to have what approach we are taking, what is the mindset, what is the question we are trying to address. I recommend that for students trying to do research, qualitative research in history and other social sciences, they can read this book called Introduction to Qualitative Research by Uwe Flick. It will just give you a start, give you a basic of how to approach this. Okay. So I'll just put the name of I the request book. you. I request you to give a reading list on our group. Right, Where right. we can, get to know about various books. Give us reading list of 4-5 books. Sure, Whatever sir. is Sure. available in this. Please Sure, share sure, on the sure. group. Sure, I'll do that. Hmm. So any Ma'am, same query, ma'am. Same query. That yeah, I'm a language student and a research scholar in Mathly. right. So I'm how to use, ma'am, this software. So maybe this again, you can use this for narrative analysis. So there you can look up studies on how to do a narrative analysis in literature. Mostly narrative analysis is done how the narrative is changing of different. So you can choose any author. In case of if you're a literature student, I'm going to take an example of Gabriel Garcia Marquez. And Gabriel Garcia Marquez have written so many books in, so there are like 6 books that he has written in consecutive order, and how there is a common theme, how the narrative is changing under that common theme in those books. So you can use that depending on different kind of work that your hypothesis, your question. Yeah, ma'am. Yeah. Yeah, so that we again come back to the basics. Okay. जो Okay, हमें ma'am. क्वांटिटेटिव के लिए बेसिक चाहिए होता है वही क्वालिटेटिव के लिए चाहिए होता है. Yeah. Until and unless we are clear on what we are trying to achieve, we can't do that. Thank you. If you have certain documents already with you, you can try putting it in the software and see how it changes for you. Right. Right. So Any any other other question? question? Any other question? Yeah, I see it's a good question that, okay, is there some free software which one can explore on qualitative analysis? So, and that's a major concern, I guess. Yeah, Our university provides things, but most of the times it's not there. Yeah, so I couldn't find any free software, but there are web versions which you can use, or you can, rent the software. You don't have to take the subscription for the whole year. There is an option, I think DDoS, which is a mixed method research software. It has the provision to, rent it for a month or something like that. That's there with the TI also. Yeah. Atlas TI also. Yeah. You So you can can rent get it for 25 euros. Yeah, so you can, rent it or maybe share it. So if the software can be shared with 2-3 people, you can collaborate and, just But download. let's find out if there is some free software available Yeah, yeah, and share on the group. yeah. More So of us far, can. I did not come across, but if I come across any, I will share.
In fact, all those programming like Python and R also had the component of qualitative analysis, but it becomes too technical and all. So Right. yeah, it's not having a very good interface and user friendly. So that's the Right. problem. Right. So that is Anyone else? Suresh sir? Okay, yes, sir. मैं तो बहुत सारी बातें समझ ही नहीं पाया कि इसमें आपकी गलती नहीं है। एक तो विषय मेरे लिए नया है Okay. और एक चीज मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, हाँ जी। जो इस सेमिनार में मौजूद सीनियर लोग हैं उनको मैं कह रहा जी। कि सोशल साइंसेस में भी अब इतना ज्यादा जार्गन आ गया है, इतनी ज्यादा क्लिशे, और जिसको कि उर्दू में गलत, मतलब उर्दू में निंदा करते हुए लफाजी कहते थे, वो आ गई है कि सिर्फ चंद लोग जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके अलावा किसी के समझ में बात आती ही नहीं है। अगर जैसी दुर्गति साइंसेस की कर दी है इंडिया में साइंटिस्ट्स ने, अगर वही करनी है तो फिर मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं तो दो बातें मुझे कहनी है। एक, ये जितने भी टूल्स हैं काफी यूजफुल है, लेकिन रिसर्च टूल्स तो नहीं करेंगे ना, रिसर्च तो मैं करूंगा, वो मुझे करनी होगी। जब आप डेटा फिजिकली देखते हैं, मैनुअली देखते हैं, तो डेटा बोलता है। या ऐसा कहें कि डेटा बहुवचन है तो डेटा बोलते हैं, जो कि आपको मशीन कभी नहीं बताएगा। किसी भी, अभी भी एआई, वो चैट जीपीटी भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। छोटा सा सवाल जिसके पीछे ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है वो नहीं बताएगा, वो मेमोरी से चलेगा। तो अगर जानती हुई चीज को ही हम रिसर्च कर रहे हैं तो फिर एक और बात है। लेकिन जो मैनुअली करते हैं, आप टूल्स को यूज कर लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी उंगली, अपना हाथ उसमें लगाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइलिंग योर हैंड, तो फिर आपको काफी वैसी बातें पता चलती हैं जो आपने पहले सोचा भी नहीं। यानी जिसको सेरेंडिपिटी कहते हैं। बड़ा भारी शब्द है वो ग्रीक लैटिन, लेकिन उससे अच्छा दूसरा शब्द मुझे नहीं मिल रहा है कि जो हम नहीं ढूंढ रहे थे वो मिल गया, तो वो तभी आपको मिला। एक, इससे भी मुझे शिकायत नहीं है, ये तो आपकी इच्छा है, आप इसी में प्रसन्न है तो यही ठीक है, क्योंकि आप वह करने तो नहीं चली हैं जो दूसरे कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है जो मुझे सबों से कहना है, रिसर्च का एक लैंग्वेज होता है, वो आपके लिए सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, प्लीज, सॉरी मैम, प्लीज डोंट माइंड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, I am criticizing ourselves, which includes Pradeep, which includes Sanjeev, which includes Avnindra ji, which includes, of all people, me, because I am the senior most here. हम लोगों ने इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स जो रिसर्च की राइटिंग की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी कि इफ यू कैन से समथिंग इन 3 words, you must never use 4 words. And that is why what you wrote was precise and proper. तो अगर प्रॉपर है भी अब प्रिसीजन चली जाती है तो फिर वो मजेदार बात नहीं होती है। बात तो तब भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। हम लोग एल्गोरिथमिक प्रिसीजन शायद न ला पाए, लेकिन फिर भी वर्बल प्रिसीजन तो आ ही सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। टाइम है? जी जी बोलिए। Do we have time? And ma'am, do you feel comfortable or do you feel you are being roasted? नहीं sir, I'm comfortable. Okay, if you feel comfortable, then open any of your slides, any slide that you like. Okay. Anything, any slide. Just. आपके स्लाइड्स अच्छे थे, औरों के मुकाबले आपके फॉन्ट साइज काफी अच्छे थे। मेरे जैसे बूढ़े आदमी को भी पढ़ने में परेशानी नहीं हुई। चलिए इसके आगे जहां आपने टेक्स्ट दिया हो उसमें आइए। जी अब यहां रुकिए। जी। अब ये जो पूरा सेंटेंस है, क्वालिफिकेशन रिसर्च हेल्प्स टू फिल इन द गैप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द, तो अगर ये
फील करता है तो गैप को नहीं फील करता है, लिमिटेशन को तो नहीं फील करता है। अगर हम इसे छोटे सेंटेंसेस में कहते, जार्गन के बिना कहते, तो हम ज्यादा अच्छा कह सकते। इट हेल्प्स टू इवेलुएट पॉलिसी इम्पैक्ट एंड बिल्ड ऑन, यू नो। राइट। तो इसको हम कम नहीं कर सकते थे। दूसरा में आइए, 1 के बाद 2 में, जी। इट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज। इसमें मुझे लगता है आप अगर दोबारा खुद को एडिट करेंगे रिव्यू वाले सॉफ्टवेयर से भी, तो 1/3 वर्ड तो कम हो ही जाएंगे, और आपको लिखने में ज्यादा प्रिसीजन आएगा, ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, मैं आपको कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि कह इसलिए रहा हूँ कि आपका डेटा मुझे बड़ा आकर्षक लगा। आपने डेटा में काफी मेहनत किया है, और रेलिवेंट जो हम लोगों के गाँव की बातें हैं, वो 12,000 का 12,000 गायब हो जाता है। आप तो कह रहे थे कुछ गाय भैंस भी आ जाता है, यहाँ तो कुछ नहीं आता है। मैंने एक बार अखबार में मैं काम कर रहा था, तो उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट किया। आप प्रदीप जी जानते हैं उस गांव को, वहां का मुखिया ने नहीं लगवाया शौचालय। तो लोगों ने पूछा क्यों, तो उसने जो दिया था वो, कहीं आपको मैं मिलेगा तो मैं ढूंढ कर दे दूंगा इंटरव्यू, जो आपने कहा है बिल्कुल वही कहा था उसने भी, कि यहाँ इतना दे देना उतना दे देना है, तो मैं शौचालय में चोरी करने नहीं मुखिया बना हूं। तो डेटा आपका काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रिसीजन ले आएंगी और खुद से कुछ अपने डेटा को देखेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि योर्स माइट बी ए वर्ल्ड क्लास वर्क। अभी थोड़ा सा उससे पीछे रह जाता है मेरी राय में, बट आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट, आई रियली डोंट नो No, sir, I एनीथिंग। appreciate the feedback and I will try to do better next time. हम सब के लिए है, Yeah. जो आपके सुपरवाइजर हैं उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। जी। We can convey this, we can create a culture, but you know, you did some very hard work. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much. I hope Pradeep ji was not too harsh. You are never harsh. No, You sir. are never harsh, sir. I am worried, you know, young people, they work so much. No, sir. No, sir. I लेकिन really मैंने सोचा कि appreciate your अगर नहीं feedback. कहना डिसऑनेस्टी हो जाएगी। ये ठीक है, ठीक है. Thank you, sir. Thank you so That's much why for your we feedback. You are welcome. request you to be here. Thank you, Arey, Neha. please. You Thank did you. a splendid job, and I will always remember you as my guru, Thank you, who introduced Professor. me Thank for you the so much. first time in my life. With maybe I have little life left in me, and maybe in future I will be using qualitative analysis tools myself for my research and my writings. But you are the first person who introduced me to this concept. I will always remember that. Thank you so much. Thank you from the bottom of my heart. Thank Thank you, you on sir. behalf Thank of you so much. Gyanotsav, and prepare yourself. We may bring you again next time after you finish your PhD for Right. more analysis, and maybe we will hold some workshop also Yes. separate from this kind of webinar. We Yes. can have workshop where you can, and others can also come in and help us learn this technique which is emerging now. I can see many positive things. For example, it does not do research for you, but Yeah. it gives components of research that so that you can generalize and put your human mind Exactly. on that. That's a Exactly. great thing. That's a great Yeah. thing, because when you take notes and collect material and then analyze, that Yeah. takes a lot of time. I have Right. myself spent years in library to collect my research Yeah. Yeah. material, so that will help. Yeah. Just that. It's just that. It's just that, and it gives Yes. you basically a starting point to work with. Starting point. Sometimes we are just so lost in our own data, in our Right. own, even with literature review, it really helped me. It Right. really helped me in the end stages because I had to compile 5 years of work, Right. what all I had read. So it Right. gave me a starting point to build those themes. I built my themes for literature review through this software. Okay, just help me identify the groups, all the groups, what citations will go in which group, Right. Right. and all of that. Right. Thank you very much. Thank you. We Thank will you. meet again for the next webinar on 6th of April. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.